फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। ये लाइव एडिशन और बैज़बॉल क्या एशेस खाक में मिल गया है? That's the big question that we're going to talk about. But first, even after 3 days, it's still being talked about. The entire Bairstow event, a large number of people believe कि गलती उसकी थी, वो बेख्याली में था। मुंगेरी लाल का अजीम सपने देखते रहोगे तो भाई ऐसे ही होगा, विकेट उड़ेगा। बट बेयरस्टो के ब्लडी ओथ की बात भी सामने आई है। लेट्स गो अक्रॉस टू आवर क्रिकेट क्रेजी फ्रेंड्स। वी गॉट चैतन्य विद अस, cricketer. Then we got Jamie Alter. Toss is also with us today. चैतन्य नंदा, जेमी ऑल्टर, टॉस रिजवी सब धीरे धीरे बफर होके स्माइल करते हुए आ रहे हैं। बट टुडे द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैव गॉटन इनटू इट। चैतन्य एक दूसरे के साथ आजी बाजी चल रहा है और ट्रेविस हेड कहता है कि बेयरस्टो ने खुद बोला ब्लडी ओथ, अगर मुझे मौका मिलता मैं निकाल लेता विकेट। Actually, I think I sort of reminded them last week. I walked out of crease at the end of. Yeah, Johnny, last week I walked out of my crease at the end of an over. I quickly whipped my bat back and questioned Johnny on whether he would take the stumps, and he said, bloody oath, I would, and ran off. अब ये ट्रेविस हेड के साथ किया, and then we talked about how what he tried to do with Marnus also. तो भाई तुम करो तो सही और कोई करे तो गलत, ऐसा नहीं हो सकता। Yes, मतलब जैसे मैंने last time भी बोला कि because he was doing it from not now, he's doing from last 2-3 years continuously. Bairstow keeps doing this, so I think it was not new for him. But he was thinking that if he, scratch take a mark in the crease and then he can walk off without giving any signal to anybody, it doesn't make what you think. It's about how the game moves, how the game goes. That is most important. And Bairstow needs to understand that there is a common sense about what to do, how to do the things. It's a live match, crucial game situation. Ball is still in the play and you are just walking off the crease. Obviously, any opponent who wants to win it will go after it. So I think there was nothing wrong. And as Travis had said, yes, he was doing this. We have seen it. This is the new thing, what Travis had said. But we have seen at Marnus Labuschagne time that he was already trying it. So I think it's right. What you get, what you reap. What you saw, you get. Yeah, you saw what you reap. खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए टॉस। बट ये दो ऑकस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं। दे आर एक्सचेंजिंग आर्सेनल, दे आर कॉमनवेल्थ पार्टनर्स, दे आर नेटो पार्टनर्स, सारे सब जगह पार्टनर्स हैं। बट हियर द टू प्राइम मिनिस्टर्स आर टेकिंग साइड्स ऑफ देयर ओन टीम्स। They're beautiful. That is what Ashes is all about. I mean, इनके politicians भी छोटे छोटे. It's not a big issue, I guess. I mean, ये तो बना दिया है क्योंकि इंग्लैंड तो हार रहा है, तो इंग्लैंड को थोड़ा मसाला भी चाहिए और थोड़ा और बढ़ता जाएगा तो हमको बात करने में भी मजा आएगा कि भाई इतना छोटा इशू एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम्स एंड इंग्लिश पीएम टेकिंग इंटरेस्ट, मतलब कि दे आर सो एंग्रॉस्ड इन दिस गेम. आई मीन एशेज उनके लिए कितना है, मगर व्हेन इट कम्स टू, आई मीन मैं सोचता हूँ कभी कभी जब आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हो तो बॉडी लाइन सीरीज कहाँ से आ जाता है, फिर जब आप बाउंसर्स डालते हो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहाँ चला जाता है आपका. आई मीन ये एक सवाल मुझे आनंद भाई आता है कि भाई आपकी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये सब चीजों पे कहाँ आ जाती है. ऐसा है कि बैट मेरी बैटिंग मेरी, दैट्स व्हाट इट इज. तो दे थिंक दे ओन द गेम. तो वो जब खेले तो सही, वो जब करे तो सही, और कुछ करे तो और कोई करे तो गलत. नहीं, बट ऑनेस्टली जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब आई मीन व्हाटएवर क्रिकेट आई हैव प्लेड एट द क्लब लेवल और थोड़ा बहुत स्कूल में भी खेला हूँ, तो आई मीन जब आप ओवर, जब तक कि अंपायर ओवर नहीं बोलता, आप टैप किए बिना, अगर ओवर भी नहीं बोलता आप टैप, चेतन भाई टैप करते हैं फिर जाते क्रीज के बाहर, आप लेग अंपायर को एटलीस्ट दिखा देते भाई या किसी को हाथ उठा के आप सिग्नल तो करते हो भाई मैं बाहर निकल रहा हूँ, चाहे कोई भी हो. एब्सोल्युटली. यहाँ पर तो मतलब यू जस्ट वॉकिंग इन द पार्क. बिल्कुल. आई मीन क्या सेंस का है यहाँ पर. So I mean, but this is really interesting. Both the PMs है, बेयरस्टो है, वो कई बार वो मुंगेरी लाल ऐसा पकड़ा भी गया है. He's been in his own world quite a lot of times. But Anand भाई, one thing, अभी मैं ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था, इंग्लिश ने ही यहाँ पर देखे, यहाँ पर बैट लग के गया. हाँ, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मिचेल स्टार्क ने शॉट खेला, यहाँ पर जैक लीच था, बैट शॉट मारा, वो बैट नॉन स्ट्राइकर को रख के प्लेयर के हाथ में गया, वो आउट दे दिया. आई मीन इसमें तो थोड़ा बहुत ये होना चाहिए ना. आई मीन यू टॉक अबाउट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, तो इसमें भी फिर एमएस धोनी, आई मीन आई थिंक यहाँ पर जो एमएस धोनी
was the best player of spirit of cricket वहां पर जब Ian Bell को बुलाया था. I mean, you can't talk about spirit when it comes to body line series. You're bowling bouncers in the test match. I mean, regular bouncers, one off नहीं है, regular bouncers. But at the end of the day, you're talking spirit of cricket. Nonsense it See, is. you tend to assume a lot of things. I think Bairstow assumed last ball था, चलो ओवर हो गया, मैं आगे निकलता हूँ. जबकि अंपायर ने ओवर नहीं बोला, रविशंकर भी वही बात बोल रहा है. Jamie is there with us, Jamie. But and then he must have just walked कि ओवर खत्म हो गया, ओवर बोलेगा तब तक मैं निकलता हूँ. They made use of the opportunity. We relived that thing very well. But it's the captains who have reacted so much more positively than everybody else, or perhaps in a humorous way. Ben Stokes he looked at the Australian wala, the thing where they had the pacifier in his mouth, and he said, "Sorry, that cannot be because I've never bowled with the new ball because they put the new ball there." Pat Cummins turns around and looks at the thing. Ki bhai pata wicket ho to underarm bhi dalenge. So at least they are able to see the humor in all of this more than perhaps a lot of other people. But one thing we must say that Rishi Sunak also said that the behavior of the MCC officials was wrong. You cannot get abusive, and it's good that they got suspended. So he's also seen that, a certain sense of fairness there. Jamie. Absolutely. Yeah, look, I think जब दो देश के पीएम ऐसे करते हैं तो आई थिंक इट्स बिकम अ बिट ऑफ अ साइड शो. अगर हम थोड़ा स्पोर्टिंग एनालिसिस से लेट्स स्टार्ट विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ऋषि सुनक बिकॉज़ ही इज द वन हु स्टार्टेड दिस. आई एम ओके विद व्हाट एंथनी सेड क्योंकि जवाब तो आपको देना पड़ेगा. मतलब हिज रीसेंट फॉर्म इंक्लूड्स लूजिंग टू लिज ट्रस्ट और अभी उसकी पार्टी वो रवांडा पॉलिसी से जूझ रही है और ये इंसान आके एथिक्स पे बात करेगा. आई मीन द अमाउंट ऑफ केसेस अगेंस्ट हिज वाइफ, his party was found to be partying during COVID. So I found it like ludicrous that someone of Rishi Sunak's stature has chosen to wait. But like all politicians, I'm sure he had a bigger topic in mind. Just coming back to Jonny Bairstow, right? मतलब हमने कल भी इसको लेकर बात किया था. Jonny Bairstow, like Jeffrey Boycott said, he was being dozy, right? Andrew Strauss said he's living in a bubble, right? एक क्लिप मैंने आज सुबह देखा. हाल ही में वो यॉर्कशायर के लिए कीपिंग कर रहे हैं एक काउंटी मैच में. यॉर्कशायर वर्सेस नॉट्स. समित पटेल, हट्टे कट्टे समित पटेल वो स्ट्राइक पे हैं. जॉनी बेयरस्टो कम्स अप द स्टंप्स, कलेक्ट्स द बॉल एज पटेल फॉल्स ओवर. ही वेट्स. He waits for 3.3 seconds, and as Patel loses balance, then he appeals. So Marnus वाले केस में Marnus Labuschagne was batting outside the crease. That is a clear attempt for an advantage. But जिस बंदे ने कीपिंग के तौर पे समीर पटेल को आउट किया, मतलब उसको ये सब बोलना मतलब. But I do want to pick up Anand what you said about the two captains. Pat Cummins and Ben Stokes have handled this very, very well. खासकर Pat Cummins, हम चार जो यहाँ पे जुड़े हैं, हम अलग कैपेसिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ चुके हैं. That was an extremely hostile press conference. Yeah, That was very और Pat Cummins उस बंदे को सलाम. जिस तरीके से उसने ह्यूमर, कुछ stats, एक typical diplomatic stat. I think a lot of people need to really credit this man on our screens. That was an uncalled for press conference. Shockingly poor press conference. To get laughter out of such a hostile press conference, all of them saying if you make such flat wickets, then we may even consider monkeying or bowling underarm. It's a phenomenal response, and it takes a lot of tact and also temperament to keep your calm in such adversity. So you got to hand it over to them as far as that is concerned. But Jeffrey Boycott का आपने नाम लिया, JV. Jeffrey Boycott now wants an unconditional apology from the Aussies. And ये वो जेफरी बॉयकॉट है जो अपने पूरी प्लेइंग करियर के बीच और बाद लोगों से माफी मांग रहे हैं. इनको माफी चाहिए किस बात की यार? जेफरी बॉयकॉट चाहे वो कैप्टन हो या प्लेयर हो या कमेंटेटर हो या हस्बैंड हो या जो भी हो, he's had to apologize for many things, sometimes in court. इस व्यक्ति को माफी चाहिए. भाई रहने दो सर, रहने दो. आज हमारे ट्रोलाधीश जेमी ऑल्टर है. but Chaitanya, let's get to the other aspect of conversation today. Let's move beyond just what happened on field to this entire aspect of Bazball. Now, if you look at Bazball, this entire phenomenon
has turned around Australian Test cricket, English Test cricket. Now, if you look at the Ankara Test record since June 1st, 2022, ever since Baz came on board, 15 tests, won 11, lost 4. You look at that run rate. There's been a near average of 2 runs per, this one for the English. They've gone up by 1.82 their run rate itself. That's a phenomenal jump. But do you believe, Chaitanya, that Bazball aggression is limited only to batting? Will you agree with Sunny Gavaskar? He says Bazball has been all about batting. They've not been able to translate that into other two dynamics, that is bowling and in fielding. Uh, Actually, baseball is like you go aggressive in cricket. Basically, they want to play a very aggressive with an aggressive mindset. But when you come to bowling in Test cricket, then you have to plan it, and you cannot be aggressive all the time. You cannot bowl aggressive balls, wicket taking balls all the time, because as a bowler, you don't have arsenal of too many wicket taking deliveries. You have a little bit of balls. Small number of arsenal which can take a wicket, so you plan accordingly. तो आप क्या प्लान करते हैं कि मैं अब आउटस्विंग करूंगा और उसके बाद सडनली एक इन स्विंग करूंगा, या आई विल बॉल अ स्लोअर बाउंसर और चौके खाऊंगा एक दो, उसके बाद सडनली आई विल बॉल वन क्विकर बाउंसर इन विच द बैट्समैन विल गेट सरप्राइज. सो एज ए baseball is like aggressive mindset. तो बैटिंग के अंदर it's very easy to do it. You can play aggressive cricket, but with the baseball also in batting, I think they need to have certain amount of thought कि कब baseball को use करना और कब baseball के से बाहर भी आना है, because it's like you going into a चक्रव्यूह but आप पता नहीं इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आएंगे. So it's like they have heard the half story, like so यहाँ पर वही प्रॉब्लम हो रही है. They don't know how to come out of that चक्रव्यूह which they have created themselves. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से, जैसे जो रूट they have a जो रूट who can bat complete out, play an anchor role, उसको भी वो baseball खेलने के लिए कह रहे हैं और he is playing a baseball cricket. तो कौन विकेट पे स्टे करेगा? You try to score 5-6 runs per over, which is okay, but you need to understand what opponent you are playing. Australia have answers to all the all the answers, have answers to all of your questions, all of your whatever you're gonna throw, whatever the plan you're gonna come out. Australia have that capacity to come out over it. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की मैनेजमेंट को समझना होगा दैट यू हैव टू प्ले अ बेसबॉल अकॉर्डिंग टू द टीम ऑफ द ओपोनेंट्स. अगर आप ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप बेसबॉल खेलिए, आप स्टार्ट हमेशा अच्छा कर रहे हैं, बट प्लेइंग टू मच ऑफ बेसबॉल व्हेन द बॉल गेट्स ओल्ड. क्योंकि क्या होता है ड्यूक बॉल, बिकॉज आई प्लेड इन इंग्लैंड, ड्यूक बॉल शुरू में इतना मूव नहीं करता, जैसे थोड़ा पुराना होता है स्टार्ट स्विंगिंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट गिविंग यू हेल्प. तो हमने देखा है जब इंग्लैंड बैटिंग करती है तो शुरू में बहुत अच्छा स्टार्ट देती है ओपनिंग में, बट बीच में दे स्टार्ट टू क्रम्बल, लड़खड़ा जाती है. वर्किंग ऑन इट. तो ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि एक प्लेयर को हम एक रोल दें कि यू हैव टू बैट कंप्लीटली एंड देन वी विल प्ले अराउंड यू. सो वो अगर करेंगे तो ठीक है. और फील्डिंग इंग्लैंड पुअर कर रही है. यस, इन फील्डिंग यू कैन हैव एटीट्यूड ऑफ बेसबॉल, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन शो अग्रेसिव एटीट्यूड, यू कैन गो फॉर अ half catches, you can try to make it a complete catch, you try to take half chances. तो वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है इंग्लैंड के अंदर. अगर इंग्लैंड अपनी बैटिंग और बॉलिंग से नहीं हारी है. इंग्लैंड अगर हारी है तो वो एक बैट कीपिंग से हारी है. बेयरस्ट्रॉ ने जो फर्स्ट टेस्ट मैच में कीपिंग करी है, दे लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ बेयरस्ट्रॉ फर्स्ट गेम, एंड आफ्टर दैट दे आल्सो लॉस्ट इट ऑफ देयर बैट फील्डिंग. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे उनको ध्यान देना होगा. दे आर ड्रॉपिंग टू मेनी चांसेस ऑन, स्पेशली ऑन अ विकेट्स व्हिच आर फ्लैट विकेट्स, व्हिच इज नॉट हेल्पिंग द फास्ट बॉलर्स, एंड देयर मेन स्ट्रेंथ इज फास्ट बॉलिंग. And I think kahin na kahin third match mein we need to see Markwood coming in, because you also need speed as well. So Markwood agar aayenge, then the swing and the the I don't know how fit he is. Will also work, because if you can bowl fast and then you can have somebody who can move the ball, who can have the art of the skill of moving the ball, will be more useful. अगर दोनों एंड से एक तरफ से 120, 125, 130 वाले बॉलर होंगे तो आई थिंक बैट्समैन गेट सेटल डाउन एंड देन दे आर एबल टू मैनेज इट. अदरवाइज you are unless until you are not playing on a very green track. So I think that's the plan. Jofra Archer, Mark Wood, they were the ones who were going to bring in that inject that amount of pace
and perhaps a Yes. certain dimension. Yes, Jamie. SK Anand is saying it's more about application. England just needs to tighten up, especially in fielding. I expect a turnaround. Ben is not the Yeah. self-doubting kind. Yes, they need to tighten up, but I think the Bazball aggression attitude needs to come into their bowling and fielding. Like if they're looking at Usman Khwaja, they have to be dogged about bowling to him in one particular area and bore him to there. You know, you're going to bowl to his hips. You just keep the ball there. You don't do anything else. You keep the ball there. I'm just saying, as a strategy, or if you're going to go get him to drive, you just ensure he continues to drive. And you get aggressive. चार boundary पड़ गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप field खोल दोगे. But you also need to position them in such a way that you cut out the angles, the lines. Like Dhoni did, you know. I was reading Venkatesh Iyer. He said he got me out because Dhoni just sharpened the angles. Bat से ball कौन से angle पे जा रही है उसके basis पे आप field कीजिए, set कीजिए. You know, some of those attitudes have to come in. Yes, Jamie. Yeah. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग आनंद की जो जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है वो है हेडिंगली पिच, राइट? देयर इज ओनली 3 days टू गेट थिंग्स रेडी बिकॉज़ टर्नओवर टाइम बहुत बहुत कम था. Will Bazball need to change? Yes. Will England bounce back? I'm 100% sure. क्योंकि ये जो हुआ ये off field, and I think yesterday it was Chaitanya who brought it up, or maybe Srini, मुझे याद नहीं है, but we're talking about how they might have even gone a bit more to use this to distract from the fact that इनका Bazball नहीं चल रहा है. अब क्या हुआ कि संडे के बाद से अगर इनके पास 100% सपोर्ट नहीं था ब्रिटिश मीडिया का और जनता का, अब है. अब क्या है कि वो जो डाउटर्स थे ना वो बैसबॉल के, अरे अब वो शायद थोड़े चुप रहेंगे बिकॉज नाउ यार नहीं ऑस्ट्रेलियंस हैव चीटेड एंड फलाना ढिमकाना. सो इंग्लैंड आर गोइंग टू हैव द एडवांटेज. लेकिन इस सबसे ज्यादा आई वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक. नाउ इन एनी अदर सर्कमस्टेंस हेडिंग ली पे आप जिमी एंडरसन को आंख बंद करके 45 की उम्र में भी आप उनको खिलाते, लेकिन आपकी बैसबॉल इंसिस्टेंस के चलते यू हैव निगेटेड व्हाटएवर स्किल इज लेफ्ट इन द मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, राइट? 40 गोइंग ऑन 41, जस्ट कमिंग ऑफ इंजरी. उसके बावजूद आपने उनको 2 थकेली ट्रैक्स दिए जहां पे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, राइट? नाउ you've reached a situation खुद की गलतियों के कारण, and I'm using the word गलती on purpose, अब आपको शायद अपने सबसे सफल बॉलर को बाहर करना पड़ेगा उसी ग्राउंड पे जहां पे सामने वाले बैट्समैन की पैंट गीली हो जाती हेडिंग जब एंडरसन और ब्रॉड बॉल लेके आते हैं, राइट? सो एडवांटेज इंग्लैंड इन सम वेज, बट नाउ मोर देन चेंजिंग बैसबॉल they need to change their personnel. और बिल्कुल जैसे चैतन्य ने कहा था, अगर मार्क वुड फिट है या अगर वो 85% भी है, आपको पेस की जरूरत है. मोर देन बैसबॉल दे नीड टू गेट द सिलेक्शन राइट. यॉर्कशायर एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे आपको स्पिनर की जरूरत नहीं है. आप फिर से जो रूट से ओवर निकलवा लिए. ऑस्ट्रेलिया विल प्ले टॉड मर्फी बिकॉज दे डोंट हैव, आई मीन ट्रेविस हेड इज नो जो रूट, राइट? यहां डालेंगे बिकॉज लाइन अब बाहर नहीं. ऑस्ट्रेलिया विल ओनली मेक 1 force change. टॉड मर्फी विल कम इन. विराट कोहली को 4 बार आउट किया डेब्यू सीरीज में, कोई टेंशन नहीं है. टेंशन इंग्लैंड वालों के पास है, यार हम मोइन को लाएं. सो इफ दे स्टार्ट गेटिंग कॉट ना, फिर इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है. नहीं, but I think I think I agree with Jamie that Jamie Anderson is not working for England right now, and जिसकी वजह से बैसबॉल इनका तो मतलब वो तो साइकोलॉजिकली पूरा बैक हो जाता है, बैकफायर हो जाता है, क्योंकि आपका इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट. बैसबॉल इज अ माइंडसेट बेसिकली, हाउ यू प्ले अग्रेसिव, हाउ यू काइंड ऑफ गो इनटू द मैच. और बैटिंग तब डेफिनेटली ब्रेंडन मैकलम खुद बैट्समैन थे जो अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलते थे, तो उनका वहां तक ही सीमित रह जाता है. बट देन यू हैव टू मेक दोस चेंजेस, यू हैव टू think, you have to pray over that Mark Wood comes good even if he's 85% whatever 90% fit, because you need that kind of pace to push Australia on back foot. और इनका बैसबॉल मुझे लगता नहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना चल पाएगा जितना बाकी टीम्स के सामने, न्यूजीलैंड के सामने चल गया या बाकी टीम्स के. one more concern is that see Jofra Archer, Mark Wood नहीं है तो आपके पास पेस बॉलर नहीं है. How can that be with England? How can that be that you don't have pace bowlers in your cupboard who can come and bowl 1 test, 2 tests? Just get one or two of these county guys who can bowl 140 clicks and get them to play 1 test at a time. That's all right, because the Aussies would not have seen that person. That person just gets you, brings you, injects that pace in you to bring the likes of Anderson into play. From the other end. Why is there such a big dearth, Chaitanya? आपको क्या लग रहा है वहाँ खाली हो गया इतना? इंग्लिश कबर्ड कैसे खाली हो सकता है? उनके पास तो हमेशा हुआ करते थे. हर 3-4 साल में कोई नया पेसर आता था उनका, तो बड़ा
See what is that? What I'm saying कि baseball game में सब कुछ ठीक है, but team selection में ही baseball का attitude चाहिए इनको. वहाँ पे कहीं ना कहीं they miss that attitude. और secondly, as you said, I always say, first season of any player, it's like a honeymoon period. We call that in cricket. क्योंकि उसका reason है because other person doesn't know about what you're gonna do, as you said. So if you doesn't know what he's gonna do, how you gonna plan for him? नॉर्मली क्या होता है, वीडियोस आ जाते हैं, वीडियोस देख के आपको पता चल जाता है कि ऐसे करेगा तो स्विंग होगा, ऐसे करेगा तो आउट स्विंग होगा. तो ये एवरीथिंग यू गेट इट फ्रॉम द वीडियोस. But as a new person, you as a batsman, you take time to understand what he's gonna do, how he's gonna bowl, how quick he is from the wicket. Is it he is a skiddy guy or is a heavy ball bowler? What kind of a bowler he is? What he has got good in Arsenal? A Yorker, a bouncer, a cutter. So you don't know all these things. So you take time about it. So I think that could be a great idea. If they have something, they have to find someone who can bowl consistent. The problem is, as you said, baseball cricket में इसलिए bowling के अंदर इसलिए successful नहीं होता. As you said कि उस्मान ख्वाजा अगर hip पे weak है तो वहीं पे ball डालते चले जाओ. You cannot be predictable. If you become predictable, तो वो पता चल जाता है कि अब यहीं पे bowling करने वाला तो batsman भी ready हो जाता है. And you need that skill to repeat it again and again and again and again. Which very few bowlers have this in today's latest modern era cricket. That's why Jamie Anderson is Jamie Anderson, because he have that capability of doing it. Like McGrath had that capability of doing it. Siraj is doing for India right now. He's bowling on the right areas continuously. So Bumrah used to do it for India. Correct. So these are the bowlers that's why they are legends. That's why they are going into the line of legends, or they are already a legend. So every bowler doesn't have that arsenal or have that set of skill. So I think कहीं ना कहीं वो चीज वो देख रहे होंगे, and I think they were thinking that they will somehow पहली विकेट उन्होंने टर्निंग विकेट बनाई तो उन्हें लगा शायद मोइन अली उनके लिए काम कर जाएंगे वहां पर, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जो है अश्विन के चक्कर में ऑलरेडी फंसा हुआ है, मेंटल ब्लॉक है, तो उसका मोइन का उंगली फट गया वहां पर, थोड़े से अनलकी रहे. कीपिंग बहुत गंदी हुई, स्टंप छूटा शुरू में, तो वो स्टंप नहीं छूटता तो शायद डिफरेंट सिचुएशन होता. बट कहीं ना कहीं फिर भी सेकंड मैच के अंदर, एज आई टोल्ड, इंग्लैंड को लगता है कि एक वो स्पिनर में बीट कर सकते थे. उनको रीजन ये था कि उनके पास अगर नेथन लॉयन है तो उनके पास मोइन अली था, या क्योंकि एक से एक की लड़ाई थी. बट अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की आर्सेनल इंग्लैंड से बहुत बेटर है. उनके पास उनसे बेटर बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, जिनके पास बेटर स्किल सेट है. इनके पास अगर स्टुअर्ट ब्रॉड और जेमी एंडरसन है तो उनके पास हेजलवुड है, उनके पास पैट कमिंस है, उनके पास बोलैंड है, उनके पास मिचेल स्टार्क है. सो उनकी जो लाइनअप है, कैमरून ग्रीन कैन बोल विच इज अ वेरी गुड, बिकॉज बेन स्टोक्स को भी हम देख रहे हैं वो यहाँ पे फिट नहीं है पूरे. अगर बेन स्टोक्स पूरे फिट होते तो इट माइट बी अ डिफरेंट बॉल गेम वी वुड हैव सीन. दे माइट हैव गॉन फॉर मोर ग्रीन विकेट्स, बिकॉज बेसबॉल जैसी क्रिकेट जो है ना, वो ग्रीन विकेट के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट है, बिकॉज वेयर यू डोंट नो how the ball's gonna behave. So if you're gonna throw the bat, you're gonna score more runs, and that's what Australia is not would have not done it. They have played the way they used to play. So वहाँ कहीं ना कहीं उनको ये benefit मिलता. So I think, as Jamie said, Headingley की wicket पे we have to see what kind of wicket they're gonna go, and what kind of changes they can bring in on the wicket. I think they have to play on green wickets if they want to win this series again. No, I don't know if you would want to really change your mindset or approach somewhere. जैसा आप चैतन्य कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन, अब 2 कैच आ गए, अब 2 कैच आपने घेर दिए, उस बंदे ने एक ने 100 मार दिया, दूसरे ने डबल 100 मार दिया, सूरत ही बदल गई. एक स्टंप मिस हो गया, एक कॉट बिहाइंड मिस हो गया, वहीं गेम पलट गया. So if you are able to execute some of the plans, then the whole thing looks a different thing altogether. But somewhere do you feel that there needs to be some more amount of an attitude coming in from the Englishmen, or do you believe that Australia now have the upper hand psychologically also? Jamie. Yes. Let me just bring in Jamie and Toss Chetan. Yeah. Jamie. अच्छा, नहीं, absolutely. Look, it's advantage Australia. यहाँ कोई शक नहीं है. इनको पता है ना, like I said, ये probably हो सके सीरीज के बाद अगर ये जीत गए तब ये पब्लिकली बोलेंगे, पर प्रॉब्ली ये प्लान करके आए. देखो, ऑल्सो आनंद, हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोस्ट सैंड पेपर गेट 5 years ago इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है अपने इंप्रेशन को थोड़ा ठीक करने का, राइट? That's why you didn't hear too many quotes coming out, right? So Australia, even before a ball was bowled, having won the WTC, they were in a far better space.
तुम लोग करो baseball. And yes, I'll say it again, baseball has been bloody entertaining, it's been bloody successful. लेकिन जब तक आप ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलते हो, you cannot say कि हाँ इस पे मोहर लगा दो कि भाई ये बेस्ट फॉर्मेट है, right? Now England are finding out, and we cannot emphasize on this enough कि इंग्लैंड 0-2 क्यों है? Not because of controversies. उन लोगों ने गलतियां बहुत करी. Chetan has mentioned the stumpings, the drop catch, one session where they lost 6 for 40 something. यहाँ भी you have to say that's a big period. So while playing baseball, the attitude and approach has to be brought up, because चलिए आपको लगता है कि भाई ये format best है, we're trying to save cricket, फिलाना, this is an environment where you can express yourself. वो सब ठीक है जब तक आप जीत रहे हो. अभी आप हार रहे हो, और इनके लिए आनंद, we all know nothing is more important. These guys, Ben Stokes will retire from ODIs. छोड़ना वर्ल्ड कप, अपने को एशेज के लिए फिट रहना है. तो उस लिहाज से देखें, they have to bring in some changes very very soon. Technical changes, approach को रहने दो. I think they'll probably be okay, you know, being aggressive, playing baseball, but वो technical, tactical changes यहाँ बहुत जरूरी है, more than anything else. See, frankly, I'm a fan of this kind of attitude because it just breathes life, and I'm bringing in thoughts. It just makes Test cricket enjoyable, watchable, and this current generation that is running out of patience, if you're able to hook them on for 4 days, 5 days, and take this match, give a match a result-oriented possibility, rather than give them a tired, boring kind of a format. Earlier, there were people who would savor that because they relished the temperament, they relished the test of grit, test of skill, and test of ability, patience. That's a different. Aaj ka generation wants to see a certain amount of aggression. They want to see some jaan. They want to see some fire. They want to see some stroke making, some competitive streak to go through all 5 days. Baseball does that. They're able to get that out of you. They force the other team also to pick up the pace, which is a good thing to do in a way. Largely, Toss, where are you? Are you for baseball, or do you want to keep cricket the Jeffrey boycott? No, not at all. Please, no Jeffrey boycott over here. Only जहाँ 4 दिन में baseball. 99 बना के नहीं, declare सुनील करते गावस्कर जेफरी बॉयकॉट यहाँ अभी No, नहीं no. चलेगा. स्विगी जोमेटो के जमाने में it doesn't work like that. But then T20 cricket, yaar, T20 cricket has taken over. I mean, if you want youngsters to watch Test cricket, because normally if you see, I mean, I'm not talking about cricketers who go and who want to play for India one day, want to don those whites at the end, कि हमारा dream है. I mean, fans. I'm talking about the fans, the upcoming fans who are already switched on to football, English Premier League. I mean, if you want to attract them, I mean, IPL, they love IPL, but then Test cricket is also something. So this is the time. I mean, baseball cricket is something that is exciting and engaging, and it's all fiery. But यहाँ पर आप सही कह रहे हो, आप तीनों सही कह रहे हो कि approach जो है bowling में नहीं आ रहा है. I mean, if you look at the summers, you were talking about Anand bhai, you were talking about the English bowling, empty English bowling lineup. यहाँ पर जेम्स एंडरसन इतने साल से खेलते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड इतने साल से खेलते, उनके बाद कौन है, कोई दिख रहा नहीं है. I mean, वो अप्रोच भी सिलेक्टर्स का भी मुझे लग रहा नहीं है वहां पर. आप सडनली टंग सॉल्ट को लेके आ गए, मींस मतलब कुछ ही मैचेस खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले. ऑल्दो ही बोल्ड क्वाइट गुड डिलीवरीज, अच्छे विकेट्स निकाले उन्होंने, बट देन उसके बाद कहाँ आपके 4-5 महीने ही क्रिकेट चलता है, आप कहाँ से लाओगे? आपको वो बिल्डअप करना है जो हम इंडिया में करते हैं. एटलीस्ट बात करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, बट हमारे पास वो टैलेंट जो पूल है एनसीए में एटलीस्ट वर्क कर रहा है, वहां पर से हमें कुछ आवाज नहीं आती है. तो आई एम कंफ्यूज अबाउट व्हाट इंग्लैंड क्रिकेट इज डूइंग. दे आर जस्ट स्ट्रेसिंग ऑन दैट बैटिंग बेसबॉल, कि उनको माइंडसेट बॉलिंग में भी लाना है या फील्डिंग, या उनके सिलेक्टर्स या उनके मैनेजमेंट के एटीट्यूड में. बेसबॉल जैसे मैंने कहा, मतलब इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड, अग्रेशन. और अगर यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना है या हमको और एंगेजिंग, देखिए हम भी नए जमाने में आ गए यार, डिजिटल, हमको भी जोमेटो स्विगी क्विकली चाहिए, एंजॉय करना है, यहाँ पर टिकटॉक स्क्रॉल करना है, रील्स स्क्रॉल करना है. तो दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग फॉर्मेट, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली टीम दैट कैन मैच अप टू दैट बेसबॉल विद बॉल एज वेल एज बैट. They are able to change the tone. Yeah, Jamie. Yeah, go ahead. No, I'm just baseball, right? चलो ये एक टर्म हो गया, लेकिन ये जो भी है ये कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया? It became because the oldest test team had gone 18 test matches with only one result, right? तो इसकी जो जड़ है, इसकी जो सोच है, ये एक terrible, like many great things in arts and in sports, this fantastic concept came out of a very dark, very poor time, right? This team had boss, they'd been number one, Joe, Root, Cook, all these guys. लेकिन जब आप 18 टेस्ट मैच में आप एक मैच जीते हो and you're beaten left, right, and center, घर बाहर, तो you need something, right? So as
as a concept, it's fascinating. You mentioned Anand about how it's attracting new viewers. It's making, and at times, like I am all for 3-day test matches in India, जहाँ पे ball घूम रही है day one से, that can be entertaining. But you can have too much of one thing, right? So there've been some gripping 5-day draws. There've been some gripping 3-day matches. Yeah. उस ecosystem में baseball की जगह बनती है, absolutely right. But again, when it's challenged, and how long will you say, भाई, we want to play this way? भाई आपकी टीम, आपके फैंस बोलेंगे भैया आप तो हार रहे हो, right? Selected at some point will say, okay guys, we brought you around for a reason. आप गाड़ी यहाँ तक लेके गए, अब तो भाई आप हार रहे हो. So before that, and that stage will come. यार लाइफ में जो चीज है, ups down. Baseball अभी push नहीं हुआ है, baseball अभी हल्का सा prick लगा है. If they lose the Ashes, then we can say, हाँ ये concept push हो गया. So I'm all for it. Take it forward. But just sorry to interrupt you there. I'm just saying you're not losing because of the attitude. You're losing because but you of the are. application, lack of application. Exactly. नहीं, but नहीं. Why यहाँ पे क्या the है? attitude? नहीं, यहाँ पे क्या है? The attitude and the application at some point इनका संगम होगा ना. Because if you're told, oh, Ollie Pope ने क्या घटिया shot खेल के out हुआ, I think Ben Stokes said, nobody in the dressing room is gonna fault him. But it was a shot that cued a collapse of 6 for 40, right? So application or attitude का संगम होगा, and that's where I think Chaitanya knows more than anyone here. Cricket is played between the ears, ना? Yeah. जो भी आपका technique है, यहाँ पे जब वो थोड़ा हुआ था ना वो fuzziness. So this is where this team is actually on the cusp or on the precipice of going down. I still back them to come back and win the next two. 5 में क्या होगा I don't know. But ये जो है ना ये attitude application, that's the whole crux of the matter. See, the point is you can't go crazy or you can't go out there and be outright aggression, but while trying to be cautious. That you cannot be cautiously aggressive. See, a defensively aggressive posture it's a military term. It does not happen in a mind space term. It's very difficult to have that, Chaitanya. A Ben Stokes cannot decide कि भाई मैं 4 बॉल को हिट करूंगा, इस बॉल को छोड़ दूंगा. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डाउट लेके आएगा कि कौन सी बॉल को छोड़ू और कौन से बॉल को मारूं. वो जब मुझे एक सोल्जर ने एक बार बोला था, सर एक सोल्जर के मन में एक चीज कभी नहीं होनी चाहिए, डाउट. मैं बोला क्यों? बोले सर सामने दुश्मन खड़ा है, अगर मेरे दिमाग में ये डाउट आएगा अगर मैंने गोली मार दी तो मेरे ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाएगा, या फिर मैं गोली नहीं मारूंगा तो मुझे गोली मार मैं मर जाऊंगा. तो मेरे पास चॉइस है कोर्ट मार्शल और डेथ के बीच में, मैं कैसे फायर करूंगा? एंड दैट हाफ अ सेकंड ऑफ डाउट can result in my death. So I have to be very sure that no matter what action I take, it is there, and I have to take that split second decision, because you got to be absolute clarity between your ears. It's a similar situation, not the same, but a similar situation with a cricketer, because you cannot have an ounce of doubt in your head. थोड़ा सा भी doubt हुआ, वो half second is the difference between a nice lovely drive and an edge to the slips. Yes. So that's what I'm saying कि जो difference आप बोल रहे हैं ना कि you don't need to have that second thought in your mind. That's very true to be a good cricketer or be a normal anything in your life. You need to have a clear thoughts in your mind. If you have a doubt, then you cannot achieve it. So what happens? अगर हम देखें last test match ही देखते हैं, Ben Stokes got out, then Broad is playing. They need around 70 odd run, and he just step out and just try to hit a ball. What he's trying to do? क्या वो मैच नहीं जीत सकते? क्या मतलब? It's not being aggressive. ऐसे step out करने से क्या 70 रन एक ही बॉल पे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना. So you need to understand कि where you have to show baseball, where you have to show this aggressive attitude, and where you don't have to show it. ऐसा नहीं है कि he is not the person कि उनको वहां बाहर से ऑर्डर दिया कि आप जाओ और मारो तो आप मारोगे ही. मतलब उनके पास वो दिमाग है, वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. वो ऐसी सिचुएशन से बहुत बार निकल चुके हैं, देख चुके हैं, और इतने सीनियर क्रिकेटर हैं. इफ ही डज दैट, उनके रिएक्शन से एक्शन से ये लगा कि डजंट केयर हम जीते नहीं जीते, बट मैं तो बेसबॉल ही खेलने वाला हूँ. इफ यू डोंट विन, देन व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेइंग बेसबॉल? सो एक तो ये एटीट्यूड की बात हो गई. दूसरी बात रही कि बेसबॉल इंपॉर्टेंट है, बट बेसबॉल के साथ जो सिलेक्शन पैनल है उसको ऐसे बॉलर्स लेने होंगे जो 20 विकेट ले सके. उनके लिए ऐसी विकेट्स देनी होंगी जहां पे 20 विकेट वो ले पाए. आप देखो इंडियन टीम जो है वो एक तरीके से उनकी जो प्लानिंग होती है, जब कोई बाहर की टीम खेलने आती है तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी थॉट जो है वो बेसबॉल एटीट्यूड से मिलती है, क्योंकि हम टर्नर्स पे खेल रहे हैं, रैंक टर्नर्स पे खेल रहे हैं. पूरी दुनिया उसके बारे में गलत बोलती है. सारे लोग बोलते हैं कि रैंक टर्नर के ऊपर आप विकेट लेते हैं, आप रैंक टर्नर पे बड़े बॉलर बन गए, आप मैच जीत रहे हैं.
but they don't care about it because they are having the result in their favor. So ऐसे ही इंग्लैंड को भी वो वाला एटीट्यूड अपनी विकेट्स बनाने में, अपने बॉलर्स पिक करने में करना होगा. Whatever media is saying, whatever anybody is saying, they don't need to bother about it. They need to just go, because बैटिंग में तो बेसबॉल खेल ही रहे हैं. फील्डिंग में उनको ये एटीट्यूड लाना होगा अपना अग्रेसिवनेस का, जहां पर वो चर्पी जरूर हो गए हैं पहले से ज्यादा, बोलने जरूर लग गए हैं, वहां पे भी एटीट्यूड में दिख रहा है. बट स्किल के अंदर एटीट्यूड कहाँ है, कैचिंग कहाँ है. बेयरस्टॉ खड़े होते हैं, देखते हैं उस्मान ख्वाजा की पहली ओवर के अंदर सेकंड इनिंग में बॉल लगता है और स्लिप और कीपर के बीच में से बॉल जा रहा है और बेयरस्टॉ ऐसे देख रहे हैं उसको. कहाँ है वो एटीट्यूड बेसबॉल वाला, दैट आई विल डू इट फॉर इंग्लैंड, आई विल टेक इट, ड्रॉप हो जाए कोई बात नहीं, बट समवेयर ही हैज दैट डाउट दैट ही विल ड्रॉप इट, दैट्स व्हाई ही डिडंट वेंट. तो वो चीजें ठीक करनी होंगी और स्पेशली उनको बॉलर्स लाने होंगे जहां पे वो 20 विकेट ले सकें, या फिर अगर उनके पास वो बॉलर्स नहीं है, इंजर्ड है, तो ऐसी विकेट्स बनाएं जो उनके पास आर्सेनल है उसको हेल्प मिले. बैटिंग तो काम कर ही लेगी क्योंकि बैटिंग उनकी ठीक है, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में. सो दे नीड टू गेट दोस काइंड ऑफ विकेट्स व्हिच कैन हेल्प, especially Jimmy Anderson. If wickets can help, he is one man who can win them test match on his own. He don't need even at 45. Yes, even at 45. गजब आदमी है. बेसबॉल एटीट्यूड टॉस वो सचिन तेंदुलकर इन ऑस्ट्रेलिया, कवर ड्राइव खेले बिना 100 मार के गया बंदा, वो बेसबॉल है. और ऑस्ट्रेलियन को थका के भी गया. वो दैट इज द बेसबॉल एटीट्यूड यू वांट टू सी, कि भाई मैं रन भी बनाऊंगा, तुम्हारी कमर भी तोड़ूंगा, और जो तुमको लगता है मेरी वीकनेस है उसको मैं करूंगा ही नहीं. लो भाई, इसको मैंने शॉट ही हटा दिया, इरेज कर दिया इस इनिंग में मैंने अपने इसमें से. नहीं, मेरा एक सवाल है आनंद भाई, जस्ट लाइक व्हाट इज, यहाँ पर हम इंडियन क्रिकेट में इंटेंट की बात करते हैं, इंटेंट से खेलना है, इंटेंट से आपको शॉट्स खेलना है, अग्रेसिव. पुजारा के ऊपर आप गुस्सा हो जाते हैं कि भाई आप वो इंटेंट नहीं दिखा रहे हो, फिर रोहित शर्मा वहाँ ड्रेसिंग रूम से बोलते हैं भाई क्या चल रहा है. आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंट एंड अ बेसबॉल? आई मीन वही तो अग्रेशन है, वही तो माइंडसेट है चेतन है भाई. आई मीन इफ यू कैन, आई मीन मुझे सवाल है इन तीनों से, मतलब हाउ डू यू सी द इंटेंट एंड बेसबॉल? इसमें मैं एक बात बताऊं, अभी जैसे आपने चेतेश्वर पुजारा की बात की, चेतेश्वर पुजारा का फुटवर्क स्पिन के खिलाफ वन ऑफ द बेस्ट है. हाल के 4 साल में उन्होंने स्पिन के खिलाफ कितने रन बनाए? तो यहां पर आपका जो कोर स्ट्रेंथ है उसी पर अगर आप नहीं खड़े उतर रहे हो, तो मैं आपसे क्या इंटेंट की आवाज करूं? आप टिक सकते हो, आप एक जगह पे खड़े होकर टिक सकते हो, आप बॉल छोड़ सकते हो, आपके पास टेम्परामेंट है. लेकिन अगर एक टीम को 3.8 के रन रेट या 4 के रन रेट से स्कोर करना है और आप वो स्कोर करने की काबिलियत नहीं रख रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं आपके साथ, मुझे बताइए. यही अब, और ऐसा नहीं है कि पुजारा स्कोर नहीं कर सकते, वो स्कोर कर सकते हैं, पर उनके माइंड में डाउट है कि कब मैं स्कोर करूं और कब मैं नहीं स्कोर करूं. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. द प्रॉब्लम विद पुजारा इज नॉट दैट ही डज नॉट हैव इंटेंट. द प्रॉब्लम इज दैट द टीम हैज सेड दैट यू आर गोइंग टू स्कोर एट एन एवरेज ऑफ 4 runs per over. So you have to get to that average. So how do I do it while defending, while weathering the storm, while ducking balls? But I have to catch up. No, if I take the first 4 overs and I'm scoring at 2 runs and over, by the time I get to 8 overs, I should be back to 4 runs and over. So the remaining next 4 overs I have to make up. That's perhaps somewhere I feel is the attitude that your team says you're going to score at 4 runs and over. And then I've got to do what it takes to score, keep going at 4 runs and over, no matter what the situation. I have to get it out. कि सेशन बाय सेशन, अब एक सेशन में आप कितना, आप दिन में आप 90 ओवर डालते हो, तो एक सेशन में 30 ओवर डालोगे आप. 30 ओवर में अगर आपको 4 runs पर ओवर नहीं, 120 रन बनाने हैं आपको कम से कम, तो अगर आप 90 पे अटके तो यानी प्रॉब्लम है ना. तो वो 90 भी अच्छे हैं. हाँ, 90 भी अच्छे, but he's still not on 90 as well, you know, with 3 he's also not scoring. That's the problem. See, I've seen the game changes a lot. When I was playing under 19, there was a batsman batting with me. A bowler came and bowled ball. He hit him 2 fours already in that over. The third ball or fourth ball he bowled a full toss, and the batsman went and stopped it. I went to him and said, "Yaar, full toss ko kyun nahi mara?" He said, "8 run bana to liye, ab kya zarurat hai?" It was like when I was under 19. So that was the mindset. और जो अच्छा बॉलर खेल रहा है तो उसमें टीम कहती थी यार इसको नहीं मारेंगे बिकॉज ये विकेट ले लेगा, इसको हमें नहीं मारना है, वी हैव टू प्ले सेफ टू हिम. बट व्हेन आई वाज प्लेइंग टिल आईपीएल, जब मैं आईपीएल और रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, देन द इंटेंट वाज कंप्लीटली चेंज्ड. वो कहते थे अच्छा बॉल डाल रहा है, पहले इसी को मारो, डोंट लेट हिम सेट.
अगर ये सेटल हो गया तो हमें परेशान करेगा, तो इसको पहले इसकी लाइन लेंथ खराब कर दो ताकि ही कांट बॉल ऑन द राइट एरियाज. सो एज ए बॉलर अगर आप मुझे डिफेंड कर रहे हो देन आई विल ट्राई टू टेक मोर विकेट्स बिकॉज मेरा एक इकोनॉमी अच्छा हो रहा है. एज ए बॉलर आपको समझो एक तरीके से ना बिजनेस की तरह चलता है कि आज के दिन मैंने ज्यादा ओवर फेंक के खर्चा कम किया और अचीव ज्यादा कर लिया, मेरा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो गया. तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे रिजल्ट निकालना, तो मैं ज्यादा विकेट लेने के लिए भागूंगा. तो अगर मैंने 20 ओवर में आपने 40 रन बनाए हैं तो मैं 4-5 चौके खा सकता हूँ 21, 22, 23 ओवर के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज 33 ओवर्स के अंदर 56 रन पे अगर मेरे को 2 विकेट मिल जाएंगी तो वो मेरा अच्छा स्पेल है. तो अगर आप मुझे मौका दे रहे हो जहां पे मैंने विकेट ली, मतलब मैंने रन दिए ही नहीं है, तो देन आई कैन बॉल दीज बॉल्स व्हिच आई कैन टेक मोर विकेट्स, आई कैन गो फॉर रन्स. और कैप्टन भी एग्री करेगा, टीम मैनेजमेंट भी एग्री करेगी. और रणजी ट्रॉफी में काफी बार ऐसा होता है दोपहर का सेशन होता है ना, तो वहां पर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर विकेट प्लेसिड है, फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ नहीं हो रहा, स्पिन के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो हम प्लान करते हैं कि हम जाके ना सिर्फ 2 रन देंगे इकोनॉमिकली. इस सेशन में हम अगर 30 ओवर फेंक रहे तो हम 60 से 80 रन के ऊपर बनाने नहीं देंगे, जबकि होता नहीं है, बट प्लानिंग ऐसी ही होती है. बिकॉज जैसे टी के बाद हम आएंगे बॉल मूव करना शुरू कर देगा, कहीं ना कहीं फास्ट बॉल, और हमने अगर 1-2 विकेट वहां ले ली तो हम गेम के अंदर वापस आ जाएंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टेस्ट क्रिकेट. यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द सेशंस. यहाँ पर इंग्लैंड क्या कर रहा है, वो एक ही तरीके का सेशन हर बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा है. उसको ये समझना होगा इस सेशन में अगर हम बैकफुट पे हैं तो हमें फ्रंट फुट पे आने के लिए 1 घंटा नॉर्मल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. 1 घंटे के बाद हम दोबारा से खेल सकते हैं. और इन प्लेयर्स के पास वो ऑन और ऑफ का बटन है, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आता है. ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अंडर 19 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. दे नीड टू अंडरस्टैंड. बट फिर भी उनको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो उनको 20 विकेट दिलाएं. आई थिंक दे आर लैकिंग ऑन दैट पार्ट. और ऐसे फील्डर को जो कैच पकड़ लें या स्टंप कर लें. ये काम करता है कि इंडिया के बॉलर्स और इंग्लैंड के बैट्समैन को बैटर्स को एक टीम में घुसा लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो 300 रन बना ले और उनको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो 20 विकेट निकाल ले. हमारे जो अगर आप आंकड़े देखोगे भाई, our top 4 has not scored 300 only once in the last whole WTC season. The entire WTC season for 2 years, they got only 1 300 plus score out of 5 batters. We've got a serious problem there. Okay, gents, lovely conversation. Thank you. बात करते करते 40 मिनट से ऊपर हो गया. क्रिकेट की बात ऐसी होती है, जब इंटेंस हो जाता है तो फिर टाइम का पता नहीं लगता है. लेकिन we'll build up to the third Ashes test. We'll talk about Headingley. We'll also talk about the T20 squad for WTA West Indies. अभी तक no announcement has happened. क्या हो रहा है? और कुछ खबरें आ रही हैं क्रिकेट नेक्स्ट पे कि भाई कुछ प्लेयर्स को एनसीए बुला लिया गया है, वहां पर जाकर उनको मशक्कत करनी पड़ेगी. व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड ऑल ऑफ दैट, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट. एंड ऑल्सो ये शिखर धवन की तो हमने बात की, एशिया कप की बात की हमने. शिखर धवन को एशियन गेम्स में कैप्टन बना दिया, वीवीएस लक्ष्मण को कोच. ये इस पर आप लोगों ने बातचीत तो की होगी, पर उसमें पूरा शो किया था. हाँ, और उस पर भी we have to no, but I'm saying we have to talk about the World Cup qualifiers. Scotland are beating Zimbabwe. They're on the same point. सोचिए. The West Indies are nowhere there. They are not there. Netherlands are smashing all over the park, and Scots are playing some phenomenal. बिल्कुल. There is a lot that is happening. चलिए क्रिकेट की बातें करेंगे very soon. चलिए bye. Thanks a lot. Thanks. Bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.